Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, please be seated. We are about to begin our session titled Education and Reading, Community and Parental Involvement. Please switch off your mobile phones or put them on silence mode. There will be a question and answer session at the end of the discussion. Our moderator for this session is Shaheen Atikur Rahman. Just a few words. Shaheen Atikur Rahman is a development worker with 23 years experience in the fields of literacy, education, gender and women's empowerment. She has participated both at national and international levels in social sector policy making. Presently the Vice Chairperson of the Bunyad Literacy Community Council, her efforts have achieved recognition at national, regional and international levels. You're most welcome. First, I'd like to welcome all of the panelists, especially the Secretary Education, that he is very lucky to be with all the women in red. I think it's very brave, but it also shows that only women are more interested in learning than the men. They don't talk more. In front of your presence, how can we? Anyway, I'm going to turn it a bit round. We've got 1 hour and we want to conquer the world. So we will just start requesting everyone just to give their name and what is their take on the title of today, Community and Parental Involvement in Education and Reading. Let us leave reading more as the front burner. Please, your name. And what do you think? 1 or 2 lines, because we can give each speaker only 8 minutes. Good afternoon. My name is Barbara Welsh. Yeah, keep it nearer. My name is Barbara Welsh, and I'm the chief of Can you put the mic on? It's something to do with here. Jaldi karo beta, time. Yeah. Yep, take mine. Yeah. Okay, we'll try again. Thank you. My name is Barbara Toy Welsh, and I'm the chief of party of the Pakistan Reading Project, based in Islamabad. Our focus with this is teaching grade 1 and grade 2 children, Urdu and Sindhi, and Pashto. This is our focus. For me, when I look at this topic, parental involvement, I don't think that we would be anywhere, for those of us who are readers, if we didn't have parents and we did not have mentors who shared books, stories, anecdotes, or things that are interesting and intriguing to us. So parental involvement is something that helps all of us to be successful. It's something that's not common nowadays, and we need to include that into the work that we're doing. Thank you, madam. Name and what is your dream for this? I'm Shahnaz Wazir Ali. Currently, I'm the acting president of Zabist, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology. But my long-term commitment to education is reflected in my position as a trustee of the Education Trust Nasra Schools. I've spent almost 38 years of my life in the education sector, starting off from teaching and then holding senior positions both in public and the private sector. Reading, I think, is something that is an issue that troubles the minds of many people, because there is one perception that with the internet and the IT revolution, the younger generation is reading less and less, and this is something that we all tend to subscribe to, that the younger generation doesn't read as much as we in the older generation read. I'm not so sure that that is so true. They read in a different way. They read for different intents and purposes, and maybe it is correct that they don't read intensively the way we used to, where we would pick up a book and read it cover to cover, get immersed in it, and then build up a library. So the times have changed, but I think that we needn't be too pessimistic about reading habits. But the question that often comes to my mind about reading and parental involvement
is that in Pakistan there are two spectrums, principally one where you have the parents who are not educated themselves, who are not literate, who can't read, and they want their children to go to school, and they are sending their children to school. So how can they help them to read? I think this is a very important question for us. On the other end of the spectrum are parents who are highly educated, who are very well-to-do, who are extremely rich, and they also don't read. And I think that's very troubling. They don't read because they're much too busy with their lives of consumerism, business, trade, industry, etc. And there are so many different incentives for them not to read. So Pakistan, I think, is finding itself in a very singular situation where we hope that the solid middle classes are reading. We don't know for sure if they're reading as much as we would like them to. The upper classes certainly read very little, I think, except for small communities within the upper classes that are connected to any intellectual activity. So I think when we look at this whole question of community and parental involvement in reading, I think that this is really important because to address these issues, I don't know about community involvement in reading. I would not really venture there too much, except some of the traditional things that do communities support libraries, and do they, in some way or the other, incentivize good readers in their community, and I think very little of that is happening. But at the same time, this old myth that if the parent is a reader, the child is bound to be a reader. I do believe in that. I think if parents read to their children, so it is a prime issue for us is to ascertain really why is it that a lot of parents who are highly educated do not spend time reading. Thank you, Shanaz. Ji, thank you. Assalamu alaikum ji. I am Fazlullah Pechuho, Secretary Education. I convey my message from Minister Education, Nisar Ahmed Kodo. He is not coming because of some issues, Probably he is in Ladkana. Reading is basically, you can say, is a shared responsibility. Government cannot alone assume the role of, doing everything. It's a basically shared responsibility. Parents, schools, libraries, others all have to play their vital role just in augmenting this reading habit. I just fully agree with Shahnaz Wazir Ali. She has rightly said, if the parents are they have the reading habits, the child may have, can read well, my wife is a good, she has the habit of reading, So my son is also has a habit of, reading too much. But I am not good reader, The government welcomes any, and supports many initiatives that, exist in Sindh. We have the very responsible partner, United States of America, USAID, They have the Sindh reading program and Pakistan reading program. A lot of amount is being invested by USAID in Sindh. They have invented so many tools, like EGRA and EGMA, early grade reading, tools. So they have wonderful, experience how the Sindh is going as far as reading is concerned. And we have introduced one class every day of reading class, right from the primary to secondary. And this is pushed by, USAID. And now it is said that the donors can fix each and every problem of the education in Sindh. But it is not. The fact is that donors can set the tone of the reforms. And I can talk hours and hours on the reforms
we are just going through, in education department in ELD. But certainly this is not, this arena where we can discuss the reforms to be initiated by the government of Sindh. Thank you, We sir. can, We can take a second yeah, we round. can. Yeah, Ji, okay. madam. Thank you very much. Bela Raza Jamil, currently heading the Sindh Capacity Development Project, but also wear multiple hats, and you can read our who we are from the books. मैं क्या कहूँ, मेरी छन को, मेरी मन को दरवाज़ा खोलो, अम्मा आई, आवाज़ बदली हुई लगती है, अम्मा हैं ये, दरवाज़ा खोलते हैं, भेड़िया आता है, छन को मन को खा लेता है. These are my earliest recollections from my mother reading to us. When we were barely able to speak, this is what, in her very musical voice, she would read to us. And that symbolism of Chanko Manko, the wolf pretending to be the mother, coming in and gobbling them up, and the mother's struggle to get them out. And of course, this is a story of goats. And so that remains constantly with me, but also that push to go from one generation to another generation, and then read to my grandchildren in the same way. That's how the power of reading and the power of narration stays. But today, as we talk about a topic that we would like to see happen, the community and parental engagement in reading and propagating reading and learning, sadly, where is the community? Where is the parental engagement? The myth of the community, so distracted, so disconnected, that in spite of having amazing wisdom in just about every human being, I mean, we go to different places, we see the oral traditions being still very strong, but there is no space for the oral tradition to be expressed. And there is no time for that to be expressed. Somewhere our priorities have got all jumbled up. So, whilst, and parental, I think there is a huge class divide, and there's a very practical reason for it. Those parents who have to work, both now, today, both parents have to work to make ends meet. Where do they find the time? The children have all the technology. Now, technology can be plus and minus, it can be good or bad. But the question is, where is the nurturing? Where is the space and time that is required for any authentic learning to take place? Where is the time for anyone? And that's my passion to see, where a teacher just stops when the child enters the classroom and says, what happened in your life today? Was there anything special that happened? And the stories start spinning. I wish stories would spin. I wish there were children's imagination. Time was given for that, whether by parents or by communities or by teachers. But that's how societies grow and produce authentic learning. I think there's tons of potential. I think we have to reconfigure the way we have organized learning, both inside our homes and inside the schools. I'll stop now. Thank you. Madam, we are all her guests. Everyone knows Amina, but a little bit more. Sir, thank you, Shaheen. I am the Managing Director of Oxford University Press, and my serious hobby is organizing this festival with a wonderful team, and also the Islamabad Literature Festival. And I'm also honored to be on the board of trustees of the Nasra School. I think as far as reading and education is concerned, I think the role of parents and the community is absolutely critical. And I think what we really need is a change of values, and also we need role models. And I think that in order to encourage reading for children, it is essential that parents themselves read. If they are seen reading books and enjoying books and going out and visiting bookshops or giving books as present, I think children will learn that. I mean, I have seen homes where some homes have no books at all. So I think that is critical. Also, I think parents should be seen spending their money on books.
Because this is a refrain that I've heard all the time, that books are expensive, we can't afford to buy books. And yet if you go to a five-star restaurant in Karachi, you won't find parking place. So I think these are the kind of values that we need to change and instill in our children, and create role models for them. Of course, I think parents can start reading to their child even before the child can read. The kind of reading of stories, and just turning a page of a book and following the development of the story is an important lesson that stays with the child all her life. I think we need a network of libraries. Of course, we shouldn't have to buy every book that we read. There has to be, in Pakistan, we need a huge network of libraries. And they should not just be a place where people can read books or borrow books. I think they should be a place where a lot of related activities taking place, where games are played, but all involving reading. And now I think education technology is playing a very important role in reading, in drawing children to reading. Even if they don't read from books, if they read in any other format. But as long as they're reading, gamification has become something very important in education technology. So all these new technical developments are making reading fun, and I think we should adopt them. I want to say very quickly that I feel that our biggest issue right now, and my dream is, I'm not sure of the number. I've heard it's 5 million children. I've heard it's 20 million children, or somewhere in between, that are out of school. And I think there has to be something that, and we can't, probably don't have time now to build brick or mortar schools. I think for that we have to use some other form of education. It could be through television, it could be through technology, but that is a problem that we need to look at very seriously. Thank you, Amina. Amina, sorry. Amina. You can't, be trivial with Sayyids. You have to be very careful in the two here. I answer to both. I'd just like to ask you another thing, the inequalities. For example, we have a very vast urban-rural divide. We forget how and what are the needs of the rural people. All curriculum, etc. is made by the urbanized. And if it's PhD, it's, sorry to say, worse. Then you have the male-female divide. I'm so grateful to Secretary Saab, who said his wife reads. He's man enough to say it, because no one will say this in hum padhte hain, she doesn't read. So the woman is the first school for the child is the mother's lap. Are we thinking of Article 25A, which says everyone between 5 to 16 must be made literate? And that is the responsibility of the state. I agree with Amina, another problem. We have 5 million plus children not in school or coming in first, second class and dropping out. But worse than that, age 10 plus, they are nearly 6 crore illiterate population. So we are the few people, जैसे सुरमा है किसी गोरी के आंखों में. We are very few and we are not doing enough. Amina, what is your take? Amina Bibi, क्या किसी का बेटा हुआ है? We just want to ask, I mean, why take it, I just want to ask, what should we do about these missing, the faceless people? How can we be their voice? Why are we not talking of communities? Are we only going to run behind MNA, MPs and the policy makers? Where is the community? Why can't we take them in front? Amina, your take on that, and especially Bela then. Well, I think communities again they have a critical role, and I think it's their responsibility to get involved in the schools in their communities. I think, you just can't expect that, okay, well, somebody else will do the job, and this is my entitlement. I think we all have to get involved, and I feel that schools in which communities are involved invariably have a
a better quality of education, and I think children are treated better in those schools. And for example, corporal punishment has been so rampant in Pakistan. It is only when the community or parents get involved in how their children are being treated that a difference can be made, and that more children will be encouraged to go to school. I know that parents and members of the community had insisted that for girls' school there should be proper toilets, there should be boundary walls and gates. And I think because of the pressure on this kind of security, I think these things became more, they were given priority. So certainly the community has an enormous role to play, and they should take notice of this and become involved. So the governments of all the 4 provinces, not only yours, they should take community, school management committees and PTAs as in the forefront. They must involve them. Bela, what do you say? Shaheen, I couldn't agree more, but at the same time, मैंने पहले भी कहा कि इस कम्युनिटी को डिकंस्ट्रक्ट करें. कम्युनिटी को हमने खुद ही फ्रैगमेंट कर दिया है. मेरे सामने करामत बैठे हैं और लोग बैठे हुए हैं. जो लोग काम करते हैं कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज़ के इर्द गिर्द कम्युनिटीज़ खुद क्रिएट करते हैं. लेबर हो, फिशर फोक हो, अग्रेरियन कम्युनिटीज़ हो, कम्युनिटीज़ अभी इकट्ठी बनती हैं, कम्युनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं किसी इशू के ऊपर. और हमारे यहाँ तो ये जो पिछले 20-25 साल का एक माहौल रहा है, बल्कि उससे पहले भी कम्युनिटीज़ बतदरीज टूटती गई हैं. अब कम्युनिटीज़ को फिर से क्रिएट करना किसी इशू के ऊपर कोई मुश्किल काम नहीं है, बट इट नीड्स एन इन्वेस्टमेंट एंड इट नीड्स ट्रस्ट. स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ का एक बात की शाहीन ने, SMCs को एक तरफ बहुत बड़ा रोल दिया गया है. सिंधी का एग्जाम्पल ले लीजिए, पचो साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं. एक तरफ तो SMCs को इतना बड़ा रोल दिया गया है कि उनके नाम पे बैंक अकाउंट्स हैं, पैसे ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाते हैं. यानी एक ज़माने में 90s की दिहाई में इधर ही सिंध में बैठ के रेट्स तय होते थे सेक्रेटरीज़ के, मिनिस्टर्स के, कि कितने पैसे कितनों SMCs को ये लोग पैसे देंगे. मैं भी तब यहीं मौजूद थी और उसमें परसेंटेज तय होते थे. आज उसको ख़त्म कर दिया गया to have better governance and transparency, so money goes directly to SMCs through the banks. Nobody comes in between, so no intermediaries. But on the other hand, उनके पास क्या इख्तियार है वो बहुत कम है. क्या वो आ सकते हैं और क्लासरूम में आके कह सकते हैं कि आज हमारा जी चाह रहा है कि हम कहाँ सुने कि वो जो 25 मिनट या 30 मिनट अब पीरियड तय हो गया है फॉर रीडिंग का, वो हम सुनना चाहते हैं कि क्या है, या हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं. सवाल ही नहीं पैदा होता. सो वी हैव टू डिसाइड एंड डिफाइन दैट रियली दिस नोशन और दिस रियलिटी ऑफ द कम्युनिटी दैट वी वांट टू रिक्रिएट, उसको हम कितना एम्पावर करेंगे. अगर जिम्मेदारी देंगे तो फिर उसको बासलाहियत भी करें और उनको कम से कम उतनी पावर भी दीजिए कि वो काम कर सकें जिसकी आपने जिम्मेदारी उनको सौंपी है. सो वी स्टिल हैव क्वाइट अ बिट टू गो, बट द कम्युनिटी एंड पीपल आर रेडी बिकॉज द डिमांड फॉर एजुकेशन इज़ सो हाई. I have yet to see a home जहाँ पे कोई कहे कि हमें तालीम की ज़रूरत नहीं है. I haven't seen that. And in the Children's Literature Festival and the Teacher Literature Festival that we do, and I'm so proud to be a founder, Amina, my co-founder of the festivals, that ऐसे लोग भागे आते हैं कि उनको तलब है तालीम की, उनको तलब है रीडिंग की, उनको तलब है इस तरह के अदबी जश्नों की. लोग आते हैं because there is a great thirst for this. Give them space. Give them an enabling environment, and Shaheen, we will see a complete radical revolution in Pakistan from what we hear कि लोगों को कोई interest नहीं है किताबों में, to actually people being thronging these festivals, and I see them thronging book fairs as well here and in other places. But what about rural areas? That's a question. आप बताएं, what is the Sindh government doing for, as Bela said, strengthening the communities to own education, to be a part of it? Ji. I tend to disagree with Amina Sayyed के 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हैं. मैं ज़रा इसमें गवर्नमेंट का रोल भी है, फेडरल गवर्नमेंट. नादरा बिल्कुल. जब बच्चा पैदा होता है, करामत साहब बैठे हुए हैं कि 90% सिंध में चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है. 90% बच्चों को
नवाबशाह में मैंने जब एनरोलमेंट कंप्यूटराइज करानी चाहिए, तो जब अब किससे लिंक करें चीज़ों को, बच्चे को आईडी से लिंक करेंगे, नादरा की आईडी से। वो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर 99% बच्चों को नवाबशाह में नहीं है तो, और दूसरी तरफ रोज़ाना मेरा प्लेटफॉर्म है, सेलुलर प्लेटफॉर्म है 8398 का, एवरी डे लोगों का उसमें मैसेजेस आते हैं कि जी टीचर नहीं आ रहा, मेरा स्कूल बंद है 7 सालों से, 10 सालों से। मेरा जवाब उनको ये होता है कि कम्युनिटी क्या कर रही है, बेसिकली जो उस रोल है कम्युनिटी का, कि कभी भी उस गांव में कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि मेरा स्कूल खुलवा दें। कल एक मैं देख रहा था किसी चैनल पे कि भान सईदाबाद दादू में किसी ने स्कूल पे कब्ज़ा किया हुआ है, उस पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये अच्छी चीज़ें आ रही हैं अभी मीडिया में। हाँ जी, वो मुगेरी का या किसका था। तो कम्युनिटी ने कभी भी एजिटेट नहीं किया अपने स्कूल को खुलवाने के लिए या स्कूल को चलाने के लिए। मैं एग्जांपल एक देता हूँ, यहाँ दादू का एक स्कूल 7 का है एक, वहाँ से इस वक्त 20 अफराद अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहाँ से पढ़ के जो निकले हैं। उसमें सैयद अब्दुल्ला शाह भी वहाँ पे जो सीएम था सिंध का, वहाँ से पढ़ा हुआ है। आजकल वो स्कूल, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस पाए के लोग पैदा कर सके, वहाँ से निकल सकें। तो बेसिकली ऑनरशिप का मसला है। अगर मेरा स्कूल है जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, मैं उसकी ऑनरशिप लूँगा अपने ज़िम्मे तो हो सकता है, क्योंकि फिर टीचर्स की क्वालिटी 40 सालों में 30 सालों में हमने जो भर्तियाँ की हुई ऑल ओवर सिंध, ऑल ओवर पाकिस्तान में जिक्र करूँगा, वो चिट पे के थ्रू होती थी कि इसको 15 टीचर्स दे दो, इसको 20 दे दो, इसको 40 दे दो, इस तरह की भर्तियाँ की हुई। लेकिन उसको स्टॉप किया हुआ है हमने, गवर्नमेंट ने जो कर सकते हैं हमने किया है। और यूएसआईडी के देखें ना, एक और इंट्रोड्यूस किया है कंसेप्ट हमने, एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यूएसएड के 110 स्कूल पाकिस्तान में, बल्कि सिंध में 18 महीने में स्कूल नहीं बना। यूएसआईडी ने हमें स्कूल हमारे थ्रू बनाए, 18 मंथ्स सखर में बने हैं। उसको हमने प्राइवेट सेक्टर को हमने फाइनल एग्रीमेंट कर लिए हैं उनसे। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और हमारा मसला ये है कि स्कूल अगर गवर्नमेंट के पास है तो जो टीचर्स एग्जिस्टिंग लॉट है, you can rely on them whether they are they don't know how to teach or they are just able to teach something, आप उसी पे जो ह्यूमन रिसोर्स पे उसी पे रिलाई करेंगे आप। तो प्राइवेट सेक्टर को हमने क्वेश्चन दिया है कि आप यू कैन हायर टीचर्स फ्रॉम मार्केट। तो ये, और बायोमेट्रिक्स, टीचर्स की अटेंडेंस, पिछले महीने में 307 के लगभग जो हमने अटेंडेंस ली टीचर्स की, उसमें एब्सकॉन्डर थे, पता ही नहीं था कि ये टीचर है भी या नहीं है। तो चीज़ें अच्छी जा रही हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इम्प्रूवमेंट में। तो ये चीज़ तो सारे प्रोविंसेस में है, आई डोंट नो अबाउट केपी, मगर बाकी प्रोविंसेस में वी हैव दिस इशू दैट पॉलिटिक्स हैज़ नाउ कम इनटू एजुकेशन एज अ टूल फॉर म्यूटिलेटिंग मेरिट। नहीं, इसका जिक्र नहीं कर, देखे ना, ये ब्यूरोक्रेसी का गिमिक है। जहाँ फंस जाती है ब्यूरोक्रेसी, वहाँ कहती है कि जी हम क्या करें, हमें तो पॉलिटिशियन ने ये बंद किया हुआ है। ये 90% तो ब्यूरोक्रेसी का रोल रहता है पाकिस्तान में, बिकॉज दे आर लिटरेट पीपल। बाकी अगर कोई मिनिस्टर इलिटरेट है, वो कहता है, देखे ना, हमने परवाह नहीं करनी अपनी जॉब की, जॉब तनख्वाह मिलनी है हमें बाय एनी कास्ट, नोबडी कैन थ्रो अस आउट ऑफ सर्विस। मगर कहा जाता है, हम एवरी टाइम पॉलिटिशियन को ब्लेम करते हैं कि 90% मैं अपने आप को ब्लेम या ब्यूरोक्रेसी को करूँगा। मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं, ज़फ़र महमूद साहब,
ही इज़ द चेयरमैन वापडा, मेरे बॉस रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में. ही इज़ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, नाउ ही इज़ हेडिंग एज अ चेयरमैन वापडा. तो मुस्कुरा रहे हैं. मैं जब ब्यूरोक्रेसी को, ये खुद सहमत हैं मेरे से, तो ये तो हम छुपते हैं सिर्फ कि जी हम क्या करें, हमें तो सियासतदान कहते हैं कि इस तरह किया जाए. लेकिन हमने 3 साल, मुझे 3 साल हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन मैंने कभी भी किसी बंदे से चिट नहीं लिया, ना मेरे हिम्मत की है उसने मेरे पास आने के लिए कि ये भर्ती करें उस्ताद. You must give me your autograph because हमारे province में एक अच्छे ब्यूरोक्रेट को कहते हैं JJUN, जेड़ा जेते उदे नाल. What is your take on this issue? Communities' involvement in promoting lifelong learning or promoting the culture of learning in the rural area. शाहीन, क्योंकि आपने ख़ुद कई दिहाइयों से दिहाई इलाके में काम किया है, देही इलाके में काम किया है, तो आप बड़ी अच्छी तरह जानती हैं कि जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, गांव के लिए गोट के रहने वाले लोग हैं, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक बाकायदा लाइब्रेरी खोलें या किताबें मुहैया करें अपने बच्चों के लिए. तो उनकी जो उम्मीद है वो उसी तरह है जैसे बाकी सब लोगों की होती है कि हमारा बच्चा अच्छे मयारी स्कूल में जाए. लेकिन उनका जो हिस्सा होता है स्कूल में, जैसे अभी बेला ने बताया, वो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ की हद तक ही होता है, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. तो सवाल मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि आखिरकार ये सिर्फ सोचना कि एक स्कूल बन जाएगा, चाहे वो अब 2 कमरे का नहीं होता, 5 कमरे का होता है, और सिर्फ वही 2-4 टेक्स्ट बुक्स बच्चे के हाथ में होंगी और शायद कभी टीचर के हाथ में भी होंगी, तो इससे पढ़ना या रीडिंग से कैसे दिलचस्पी पैदा हो सकती है. तो वो कहाँ है लाइब्रेरीज़, वो कहाँ है रिसोर्स सेंटर्स, वो कहाँ है किताबों की जगह जहाँ पे एक इलाके में, चाहे वो देहात का क्यों ना इलाका हो, और शायद पहले तो बहुत कम ही लोग उधर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कोई जगह होनी चाहिए. तो ये किसी हुकूमत ने मुहैया नहीं किया और ना कम्युनिटीज़ ने किया है. हम कम्युनिटीज़ के बारे में सुनते हैं, वो हेल्थ के प्रोग्राम शुरू कर देते हैं या साफ़ पानी पीने के लिए या कोई और इस तरह के प्रोग्राम होते हैं कि, लेकिन लाइब्रेरियाँ तो नहीं सेट हुई. किताब घर कहीं आपको दूर दूर से नहीं नज़र आते. फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, ओवरपासेस, मेट्रो, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन की बातें होती हैं. मुझे बताइए कितनी हुकूमतों ने, और ये ज़िम्मेवारी मैं भी इसमें शामिल हूँ इस लिहाज से, कि कितनी लाइब्रेरीज़ बनाई हैं. कहाँ हैं वो बड़े बड़े लोग जो शहरों की कम्युनिटीज़ हैं, चलें उनकी बात कर लेते हैं क्योंकि देहात में उनके पास वो वसाइल नहीं हैं. लेकिन जो शहरों की कम्युनिटीज़ हैं, कहाँ पर आपको नज़र आता है कि एक शहर में लाइब्रेरीज़ खुल रही हों या पार्क्स हों या कोई सकाफती सेंटर्स हों? तो मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा फुकदान है, और गवर्नमेंट को भी और सोसाइटी को भी, दोनों को मिलकर इस चीज़ को फ़रोग़ देना चाहिए. किसी तरह इंसेंटिव्स देने चाहिए कि जिसने लाइब्रेरी कहीं खोलनी है उसको हुकूमत जगह दे, कुछ उसको सहूलत दे, और फिर साथ जो बड़े बड़े फयाजी करने वाले लोग हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं, वो भी आगे बढ़ें और कोई टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं. ये बहुत महंगी बात नहीं है कि कोई लाइब्रेरी बनाई जाए. तो आई थिंक जब हम कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, कम्युनिटी जो देहात के इलाकों की है वो तो इस हद तक ही जा सकती है ना कि हमारे इलाके में कोई एक लड़की है जिसने मैट्रिक किया है या इंटरमीडिएट कर लिया है, तो यहाँ पे एक स्कूल खुल जाना चाहिए. बट दैट्स अ वेरी लिमिटेड अप्रोच. Just going to school and reading your qaida and reading your textbook is not about inculcating the love of learning for reading. It is not. It's a very, very limited exercise. This urge that everybody has, that I want to read, to dream, to aspire, to be free from my physical self, to be free from this temporal life, time and space, to be in another place, let my mind wander. ये जो है हर शख्स चाहता है. ये फ्रीडम, ये आज़ादी, ये सोच की आज़ादी, जहन की आज़ादी, ये कहाँ किस तरह मुहैया की जा सकती है? तो आई थिंक what is your three take things on- I'll quickly cap up. One, in the urban centers, there should be, and we should pursue, at least advocate with every government, that there should be a clear-cut incentivized policy for libraries to be set up,
where a lot of people can have easy access, and the private sector, corporate sector, and philanthropists should step forward, and government should allow for that. And in the rural areas, wherever it is feasible and possible, at least in the towns, बड़े-बड़े अगर आप गाँव में नहीं कर सकते तो शहरों में तहसील के लेवल पर libraries definitely set up करनी चाहिए, और districts के जो budgets हैं उसमें मेरा ख्याल में एक mandatory condition बना देनी चाहिए कि libraries set up करें. फिर community का कोई इसमें role हो सकता है. One thing I'd like to ask you, one thing which is coming around by parents, the savvy parents who are rich, wild and wonderful, that because of technology and internet, their children are not going into actual reading a book. What is your take on that? I think that the children who have the tablet, or Put this thing up. I think the children who would have the tablet would be those children that the parents would have money to buy them the tablet. So whether they learn to read or not, their parents are going to make sure that they learn to read, and the technology will be there to support them. But I want to go back to the community to make a comment about that. Because I've been working in project work for a long time in many different countries, and we can provide people with books, we can provide the libraries, and we can come back in 1 year or 5 years and they will be exactly the same as when we left them. I've been to many schools in Pakistan since I've been here. Some schools I'll go to the head teacher's office, and the head teacher will have the most beautiful library with a collection over the last 20 years. The books are nice and clean, untouched, a page isn't turned. You saw our mobile library outside, and we're trying to do something different. So the project that we have now is sustainability. It's here we are going to teach the teachers. We're going to be here for the parents and the children. But at the end of the day, this is your project. If you don't own this project and believe in reading and be passionate about reading, nothing is going to change. We can't do that for you. So this project is different in that we're not giving anything. It's people need to give. People, teachers, parents, others, secretary, they need to demonstrate that, yes, we're interested in our children learning to read. And because we're interested, this is our investment. So with this mobile library that you see outside, there are about 10,000 books in that library. And it visits a school every week, and within that week, there are set schedules, different kinds of activities for the children. Then it goes to another school. So what happens to this first school? That first school will get a small box of books with 25 to 30 books. And someone will come and show the teacher what you do with those books, and then go away. 2 weeks later, someone will come back to see whether or not the books are still in the box or they were out of the box. And we will continue to do that for a few months. But this is a lesson learned, is that if we want kids to read, and if we want parents to have their children read, especially in the rural areas, then there needs to be a purpose. There needs to be a reason. So if kids can tell their parents, Mommy, I can read, or this is what I'm reading, and we can convince them that if your child learns to read, you will have a better quality of life in your old age, maybe we'll get somewhere. But if we keep giving, I don't think that it's going to make much of a difference. Thank you. Amina, if we all get together and sign a petition, and Zafar Saab can take it to the Gods Almighty in Islamabad, that there should be no tax on books, on paper, so we can print absolutely a large number. You see, the cheapest book is 200. A person who earns 5,000 a month will definitely want a pastry rather than a book. If that goes, can you divert it there and make comic books types, which is easily to understand? In Japan and all these countries who have run past us ferociously, is because the children have a lot of good, nice, savvy comic books to read. They understand the gist of what is a story. What is your take on that? Absolutely, Shaheen, I agree entirely. I think we must produce comic books. I've been trying to get an author to create some Pakistani characters
some children who are having a lot of fun and going in for all kinds of adventures and detective stories. And I think something like this will really attract children. However, we have started what we call graphic novels. They're actually comic books. And our first comic book was on the Qaid-e-Azam. And, there was a bit of a reaction. They said, you've trivialized him. How can you produce a comic book on the father of the nation? And my reply was that we are trying to introduce him to children as a role model. So we are actually producing these comic books for children, and they're fairly popular. But I agree, there should be no duty on paper. And I would say that, we would like to start off with comic books, create some interesting Pakistani children characters who would have a wide appeal. Very quickly, I want to say that one way that we have to get children interested in reading or into the habit of reading is by changing our examination system. Our system is such that it produces, rote learners. It encourages rote learning. And there's no need to read outside the textbook or outside the curriculum. We have to change the system, and I'm sure that will produce more children who are interested in reading. Thank you. Secretary Sahab, last question before we open for questions. I just want to ask you one thing before you go again. Ram. The biggest issue I think Pakistan is facing more than children are the youth. The ages, let's say, between 10 to 16. There's nothing for them but frustration. And all these bomb and all these things are because of that. What is your take on that? What should we do for children to make them get relevant material to read? For example, how to have kitchen garden or how to have biogas. All these love and kisses is okay for a while, but then it doesn't fill the stomach. बच्चों को पढ़ना नहीं आता रूरल एरियाज में. अब आप किचन गार्डन की बात कर रही हैं. यूथ मतलब यूथ वही 6 और 10 साल के, ठीक है ना. मेरे ख्याल में 10 साल के बच्चे को टॉकिंग बुक्स कैसेट्स होनी चाहिए. लेकिन आप देखें ना, आपके स्कूल में टीचर नहीं जाता तो कौन पढ़ाएगा उनको? कैसेट्स अगर कौन उनको करेगा? बेसिकली जहाँ आपका बेसिक जो सिचुएशन है एजुकेशन की इन होल पाकिस्तान एंड होल सिंध, उसकी असेस करें. हम बढ़ के मारते हैं, इतनी बढ़ के मारते हैं कि अब यूथ का क्या करना चाहिए. देखें ना, मेरा बीए पास बंदा, वो बेसिकली उसको स्किल्स नहीं आती, कहाँ जाएगा? वो तो हर जॉब करने के लिए वो आता है गवर्नमेंट के पास, जी मुझे पियान रख लें, मुझे आप फ़लाँ जॉब दे दें, फ़लाँ जॉब दे दें. गवर्नमेंट ही और शी इज़ बैंकिंग ऑन गवर्नमेंट जॉब. ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब्स और पेंशन. अच्छा, जैसे ही आप उसको किसी को जॉब दे देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, 1 करोड़ की लायबिलिटी गले में डाल देते हैं आप उसी वक्त. तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जाएं, आप बेसिकली स्किल्स दे दें. अमन फाउंडेशन का स्किल डेवलपमेंट सेंटर, उसको आप रेप्लिकेट करें चीज़ों को डिस्ट्रिक्ट्स में. वंडरफुल, दे आर जस्ट गिविंग ट्रेनिंग टू कॉमन पीपल. बेसिक जो चीज़ है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे फोकस करें. फिर बच्चों को आपने मिस कर दिया टारगेट्स, MDGs आपने मिस कर दिए, आपने SDGs को भी मिस करेंगे, ठीक है ना. तो आप अभी से अगर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे फोकस करें प्रॉपर तरीके से. देखें, मेरा अर्ली चाइल्डहुड सेंटर बनाया लियारी में, मैंने DCTO कंपाउंड में स्कूल्स को टर्न अराउंड हमने किया हुआ है. फोकस करें, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं चीज़ों को. तो अब आपने मिस कर दिया. 11 साल बच्चा कुछ नहीं आता उसको, 12 साल के बच्चे को कुछ नहीं आता. तो बात यह है कि वी आर ऑलरेडी डिप्रेस्ड. डॉन पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो, उर्दू पेपर पढ़ो, कुछ पढ़ो, देखते ही लगता है खुदकुशी करके बंदा मर जाए. तो हमें देखना चाहिए व्हाट कैन हैपन. आई मीन ऑल दिस यूथ, वी हैव टू गिव देम अ वॉइस. वी कैन टेक स्कूल्स एंड वॉलंटियर टाइम. आप लोग जो छिची मिची भागते हैं ना बीच लग्जरी में, ज़रा कच्ची वादियों में भी जाके हफ्ते में 1 दफ़े भी पढ़ा लो. दिस इज द रियल वट्टा सट्टा.
ये इधर रोमांटिक इलाके में फिरने से कोई फायदा नहीं. मुल्क यह है, इसको बेहतर बनाना है. खुदा दे वास्ते अकल करो. Question and answer time, everyone is glaring at me, even the woman with the dupatta. I'd like Zafar Sahab. Zafar Mahmood is one of the best bureaucrats. His only fault is he's impeccably honest. एक क्वेश्चन तो पूछ लें, शरीफाना वाला, शैतान वाला नहीं. Questions? जफर साहब को बिठा दें सेक्रेटरी एजुकेशन, मिनिस्टर एजुकेशन की जगह. जगह बैठा दें सेक्रेटरी. लोड शेडिंग का कुछ नहीं कहना इनके सामने. ये ले वो काका इधर आ जाओ. मेरा देखो. Anyone else? जी, ऐना कम द हेड वाला. जी, जल्दी. बस माइक नहीं वो पूछ रहे हैं. जी, thank you Shaheen for asking me to ask a question. I think basically the problem is that what do we want our children to read? This is the real question. Because I know for sure that when I was a student, we read all these storybooks which taught us human values. We read short stories written by Prem Chand. I still recall एक उसकी कहानी थी ज़ेवर का डब्बा जिसमें मुसलमान करैक्टर थे, एक गमनादारी बुज़बखर जिसमें हिंदू करैक्टर थे, उसकी पंचायत थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स की इंटरेक्शन थी. तो ये सारी कहानियाँ जो हैं जिसमें कि ह्यूमन वैल्यूज़ को सपोर्ट किया जाता था, दोज स्टोरीज आर नो मोर देयर इन आवर क्लासरूम्स, इन आवर टेक्स्ट बुक्स. I think we need to have some kind of system on which the stories जो हम पढ़ें, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उसको कोई ऐसे लोगों से लिखवाएं या लिखी हुई पुरानी जो हैं उसको दोहराएं और उसको रीडेबल भी बनाएं, उसको अट्रैक्टिव बनाएं. जैसे अमीना सैयद ने कहा कि हमें उसमें जो है उसमें तस्वीरें जो हैं और रीडेबल बनाएं. मगर बुनियादी तौर पर हमारी सोसाइटी का जो असल इशू है इस वक्त कि पढ़ना नहीं है, पढ़ाना क्या है, ये कंटेंट जो है उसके ऊपर तवज्जो जो है मेरे ख्याल में ये. औरतें बैठी हुई हैं, 4 तो ना, यहाँ पे 5. थैंक यू जी. मेरा नाम चौधरी मोहम्मद जुल्फ़कार अली है. मैं विद फैमिली मुल्तान से इस इवेंट के लिए यहाँ आया हूँ और मैं पिछले साल भी आया था, मैडम को पता है. आज मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम चीज़ों को बीइंग ए पाकिस्तानी जब तक ऑनर नहीं करेंगे ये चीज़ें ठीक नहीं. हमें अपने घर में बच्चों को पाकिस्तानी बनाना चाहिए. मैं अपने स्कूल का जिसमें मैं पढ़ता रहा हूँ उसके 3 साल से सेक्रेटरी जनरल ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के तौर पे चला रहा हूँ स्कूल में. मैं अपने बच्चों को हर पेरेंट्स मीटिंग में जाता रहा हूँ. मेरे बेटी आज का ग्रेजुएशन करने मेलबर्न गई है और मैं अपनी फैक्ट्री में जो वहाँ के देहाती एरिया में है, जो वहाँ के स्टूडेंट हैं जो मैट्रिक में फ़ारिग होते हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल बनाया है. 3 महीने के लिए उन बच्चों को हर तरह चीज़ें हम सिखाते हैं और फिर मुख्तलिफ इदारे विजिट करते हैं ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में उनका काम आना शुरू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Thank you. I'm Hina Kazmi. My question to the panel is that all the connection of community and the reading with the children and would happen only when the teachers would know how to develop the skill of reading into a child. Who is going to do that? Actually, you should start by lobbying with mothers. Mothers like Secretary Saab's wife is changing the thoughts of a child. Mothers must give more time if she is literate. Ji, jaldi. I am Dr. Ayub Sheikh, editor of a Sindhi daily Awami Awaz. दो मेरी सजेशंस हैं, आपको भी सीखना चाहिए ना. एक बात तो ये है कि 2002 से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने करिकुलम फ्रीज कर दिया था. एक तो
जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उसको डीफ्रीज करें। और दूसरा, हमारे बच्चे जो टीवी पे कतरीना कैफ देखते हैं ना, तो घर में और अतराफ में उस तरह का माहौल नहीं है, टोटल झूठ और फ्रॉड है। ये फ्रॉड बंद कराएं। अभी तक हम अलेक्जेंडर जो कॉन्करर था, एग्रेसर था, उसको अलेक्जेंडर दी ग्रेट कहते हैं, उसको इन्फीरियर कहना सीखें। जैसे ही हम हिस्ट्री को चेंज करेंगे ना, ये नादिर शाह, ये अहमद शाह अब्दाली, ये औरंगजेब, ये सारे जो कातिल थे और मीनार बनाते थे इंसानी जिस्मों के, इन सब को हमारे टेक्स्ट बुक से निकाल दें। मैंने आपको आज 4 चीजें सिखाई हैं। देखिए, मैं डॉक्टर साहब के जवाब दूंगा। मैं ये डीप फ्रीज हमने कर दिया है करिकुलम को। फर्स्ट टाइम सिंध ने करिकुलम एंड एजुकेशन एक्ट बनाया है, उसे करिकुलम एडवाइजरी कमेटी हमने बनाई है, रिव्यू किया है करिकुलम। बे से बंदूक लिखा जाता था जहां, उसको हटाया है हमने कि बंदूक की जगह कोई और चीज़ लिखें। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि ये सच नहीं है। 2006 में एक नया करिकुलम बना और उसके बाद बतदरीज, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि करिकुलम में तब्दीलियां आ रही हैं। वो उम्मीद है कि शायद इससे भी तेज़ी से तब्दीलियां आएँ, मगर ज़िम्मेदारी के साथ। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि तारीख़ को बदल दिया जाए, ये मैं मानती हूँ कि ये जो ग्रेट हिस्ट्रीज़ हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, शेरशाह सूरी द ग्रेट, इसको अलग और भी ग्रेट लोग ढूंढने चाहिए, मगर जो सच है हिस्ट्री में उसको वहीं पर रहने देना चाहिए, उसको बदल नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज हम बदलना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को उठा के बदल देंगे, ये मतलब अगर ग्रेट अलेक्जेंडर था तो और भी कोई इंसान होगा उसी पीरियड का जो कि बहुत मानी गिरामी होगा, मगर हम उसको ढूंढते नहीं हैं। तो हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ लिटिल पीपल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट डोंट से दिस कि हिस्ट्री उठा के बदल दें, तोड़ मोड़ दें, बिकॉज दिस इज हाउ वी वुड लाइक इट। दैट्स डेंजरस वर्क। मेरी करिकुलम रिव्यू कमेटी में डॉक्टर बर्नार्डिन थी। वाह। किसी ने, सोसाइटी ने उसको भगाया गया यहाँ से, थ्रेट किया गया। सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। अखबारों में आया कि मेरा कम्युनिटी, उसका वो रिव्यू कर रही थी कोई किताब, उसको ज़बरदस्ती पुश किया गया, भगाया गया, वो जाके लैंड किया उन्होंने कनाडा में। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, और किसी सोसाइटी के तबके ने, किसी ने उसकी मजम्मत नहीं की। मेरा ये कहना। I am not an educationist. I am basically a retired naval officer. But I am running a complex in Kurangi for the underprivileged children, of which Ms. Amina Syed is also a member of the board. The problem with reading is that we do not have trained library teachers. I have got 4 libraries in that complex, housing about 25,000 books. But for the last 8 years, we are not finding any teachers who can come to the library, English or Urdu, and teach students how to refer to the library, how to select books, and what to read. What are we doing to train teachers in library science so that they are able to teach the students? Very good question. Yes, very few. Excellent. Very few librarians. We want a woman also. जी, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया ख़ान है। मैं हेड कर रही हूँ करिकुलम विंग को, एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से एक छोटी सी बात इस वक्त शेयर करना चाहूँगी कि जब हमने सिंध गवर्नमेंट ने क्लास 1 to 5 की किताब को रिव्यू किया और उसका टेस्ट एडिशन आया, और उसके बाद हमने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, टीचर्स से रिक्वेस्ट की कि किताबें वेबसाइट पर पड़ी हुई हैं, काइंडली इनको रिव्यू करें और अपना फीडबैक दें, बिकॉज़ ये टेस्ट एडिशन है। बट बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी और फोरम पर बैठकर बहुत सारी बातें की जाती हैं, बट जब प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूट करने का वक्त है कि जहाँ पर आप चेंज ला सकते हैं, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ना कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट थी, ना पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थी। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें फोकस करना होगा कि बहुत सारे मसाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वी कैन ओनली ब्रिंग अबाउट चेंज विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी एंड विद द पेरेंटल सपोर्ट। थैंक यू।
अभी जो बाक़त साहब ने कहा कि लाइब्रेरियन की ज़रूरत है, I was reminded of my childhood when I used to, as a child I lived for a few years in San Francisco, and I used to go to the local public library, and the librarian over there would welcome me and tell me what to read. And one day she said, we are having a competition, you have to write a short story, but the words can only be taken from nursery rhymes. So because of that, I sat and read all the nursery rhymes, and I started picking words, and I wrote a little story. So I think we need active librarians. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक्चुअली जब मौका देते हैं, और अभी अंजुम बैठे हैं और बाबरा बैठी यहाँ पे, कोई भी किसी भी स्कूल में जाके टीचर्स को मौका दें और कम्युनिटी को मौका दें, तो उन्होंने कहा कम्युनिटी ने 100 किताबें बना दी क्योंकि उनको वक्त मौका मिलना चाहिए। और सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हैं, मेरी एक गुजारिश है, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरे सिंध में कम से कम ये फैसले हो जाएं कि एसएमसी का जो फंड है उसमें इजाज़त होनी चाहिए कि वो बच्चों की किताबें ले सकें और साथ में इस तरह की मैगज़ीन्स ले सकें जिससे उनकी नॉलेज में वाकई में इजाफा हो और अलावा टेक्स्ट बुक्स के कुछ और पढ़ने को मिले। इसकी इजाज़त बाकायदा होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज दे से कि वी आर नॉट अलाउड टू पिक अप एनीथिंग फ्रॉम एनी बुक और एनी मैगज़ीन फॉर चिल्ड्रन। आई थिंक दैट बी अ बिग रेवोल्यूशन। थैंक यू। मैं आप एसएमसी के देखें ना, हाईली पॉलिटिसाइज हो गया वो भी, उसमें हाँ एसएमसी। आप अब किसी स्कूल में जाएं, एसएमसी के फंड्स का रजिस्टर देखें तो बेतहाशा पैसे पड़े होंगे। आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किए कि जी मैं डरता हूँ ऑडिट होगी मैं मर जाऊँगा, या किसी ने डराया उसको ना खर्च करना बेटा अंदर चले जाओगे, या किसी ने 1 महीने में सारे पैसे खर्च कर डाले। तो देखें ना, वो भी लोअर पॉलिटिक्स इतनी भयानक है, आप उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पा सकेंगे। तो कम्युनिटी की गवर्नमेंट, मेरा ये आखिरी इनका यही है कि गवर्नमेंट कैन नॉट डू अलोन एनीथिंग अनलेस के कम्युनिटी कम फॉरवर्ड, के जैसे हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंसेप्ट दिया है, ऑनरशिप दें स्कूल्स को डिफरेंट लोकेलिटी में। या उमरकोट से तकरीबन कोई 1.5 घंटे के फासले पर एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है दैमानी। वहाँ पे कोई स्कूल नहीं था और वो कई साल चक्कर लगाते रहे। उस वक्त सेक्रेटरी साहब डॉक्टर फजल पेचो नहीं थे, तो जो पहले सेक्रेटरी साहब थे वो मिलते ही नहीं थे, बात ही नहीं सुनते थे। पिटिशन पर गांव वाले करते रहे कि जी खुदारा हमारे पास कई इधर गांव हैं और गोट हैं और यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, एक स्कूल बनाया जाए। तो मैं एक उम्मीद का पैगाम ये देना चाह रही हूँ कि इन्होंने क्या किया, फिर इकट्ठे मिलकर, बहुत ही गरीब कम्युनिटी है वहाँ पे, आपको अंदाज़ा ही होगा थर के इलाके में। तो उन्होंने कहा कोई हमारी बात नहीं सुनता, हम खुद ही स्कूल बना लेते हैं। तो उन्होंने पहले 1 कमरा बनाया, फिर दूसरा कमरा बनाया और अपनी जितनी भी पूंजी थी कुछ जोड़ के 2-3 कमरे बनाए। वहाँ पे इस वक्त 250 बच्चे पढ़ते हैं। तो उनकी क्या गुजारिश है, वो कहते हैं हमें किताबें चाहिए वो कहते हैं किताबें चाहिए, हम पढ़ना चाहते हैं। और वहाँ के लोग हैं वही टीचर्स बने हुए हैं, कुछ कभी तनख्वाह मिलती है नहीं मिलती। तो सेक्रेटरी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, इनकी दोबारा मैं तवज्जो दिलाऊंगी दैमानी तो मेरे ख्याल में एक यकीनन एक उम्मीद है, अभी भी बहुत उम्मीद है और एक चाहत भी है लोगों में कि अच्छे स्कूल हों, मयारी स्कूल हों और किताबें हमारे बच्चों को मिले। तो जो भी मुमकिन हो सकता है गवर्नमेंट से, टैक्स इंसेंटिव्स, पॉलिसीज़, लेजिस्लेशन, सेंटर्स, लाइब्रेरीज़, वॉलंटरी डोनेशन, हर चीज़ पर हमें फोकस करके बच्चों के पास हर स्कूल में एक छोटी छोटी लाइब्रेरी कायम करनी चाहिए और किताबें देनी चाहिए। Okay, it'll be a very short one. We've been talking about library. We've been talking about using the library. I think we also need, and we're making an assumption that children can read. From grade 1 to grade 3, children are learning to read. If they can learn to read at the end of grade 3, they will use the library or they will ask for the library. For the person who is looking for library training for your teachers, Google VSO and you'll find some wonderful training. Thank you. Wonderful. I don't want to take up much time. The last thing, it can be done. We can change this country around. और मेरी last word है,
जब रक्स करना है तो पैर की जंजीर की तरफ ना दे, करेंगे. Thank you. Ladies and gentlemen, the next session in this hall will be the book launch of the book Cinema and Society, Film and Social Change in Pakistan by Ali Khan and Ali Noble Ahmed. This session will begin at 3:45 p.m. Thank you.